So, good morning. आज हम लोग today we will learn about LTI system. In my previous videos, I have taught about the basics of signaling system and systems. And now this is the second part of system, that is we are starting LTI system. Okay. तो मेरा कर्सर दिख रहा होगा सबको। ये मैंने भी चेंज किया है मैंने। तो लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम तो क्या है, देखो मुझे भी नहीं पता, मैंने भी नहीं पढ़ा, मैं साथ में ही पढ़ रहा हूँ इन सबसे। तो जो बेसिक जो हम लोग इसके नाम से पता लगा पा रहे हैं, लीनियर LTI, तो लीनियर टाइम इनवेरिएंट की ये पहले प्रॉपर्टी शो करा कि ये लीनियर है। देखो ए एक्शन में ए हो रहा है तो y1 में ए हो जा रहा है, तो ये लीनियर है। ये वाली प्रॉपर्टी जो पहले पढ़ चुके हैं। और जो ये यहाँ पे है, यहाँ पे ये है टाइम इनवेरिएंट कि इसने चेंज किया तो वाई में भी उतने का टी नॉट का चेंज हो जाए। मान लो एक्स में टी नॉट का चेंज किया तो वाई में भी टी नॉट का चेंज हो जाए, तो ये टाइम इनवेरिएंट है। और दोनों को मिला दो तो ये हो जाता है LTI सिस्टम। ए एक्स टी डब्ल्यू एक्स टी माइनस कैपिटल डी। अच्छा ठीक है। ठीक ठीक ठीक। तो इसमें देखो कि कॉन्टिन्यूस टाइम LTI सिस्टम कि इसको देखो, ये डेल टी है, ये डेल टी है, इसको देखो यूनिट इम्पल्स। ठीक, तो इसका LTI लेंगे तो आएगा मान लो ST। ठीक, अभी मान रहे हैं कि ये कुछ ST आया है, अंदर कुछ ना कुछ हुआ है, अंदर क्या हुआ हमको नहीं पता, ये ब्लैक बॉक्स है, तो ये आया यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स। ठीक, अब मान लो यहाँ डेल टी था, अंदर सिस्टम से गया तो ST आ गया, फिर मान लो डेल टी माइनस टा हो गया, तो यहाँ भी ST माइनस टा हो गया। क्यों एग्जैक्टली टी माइनस टा हो रहा है, इसलिए है क्योंकि टाइम इनवेरिएंट है और हम लोग LTI सिस्टम पढ़ रहे हैं, इसलिए ये टाइम इनवेरिएंट है। इसलिए अगर यहाँ भी टाउ का शिफ्ट है तो एग्जैक्टली सेम यहाँ भी टाउ का शिफ्ट आएगा। ठीक, यहाँ पे कर्सर पे ध्यान दो। तो अब डेल टी माइनस वन, यहाँ भी ST माइनस वन। अब यहाँ पे हम एक्स वन इंटू कर रहे हैं। ठीक, एक्स1 डेल टी माइनस वन, यहाँ भी सेम x1, यहाँ यहाँ देखो डेल टी माइनस वन यहाँ पे है, डेल तो यहाँ ST माइनस वन आया। अब यहाँ पे x1 से किया तो यहाँ भी x1 से इसलिए हुआ क्योंकि ये लीनियर है ना, ये वाली लीनियर प्रॉपर्टी शो कर रहा है ये वाली। तो हम लोग इसलिए एग्जैक्टली वही आया जो यहाँ आया क्योंकि ये लीनियर है। ठीक, अब यहाँ पे अगर x2 से करेंगे और इसको 2 से शिफ्ट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली x2 आएगा, यहाँ पे जो h वो भी 2 से ही शिफ्ट होगा। ये दोनों ये इक्वेशन सेटिस्फाई करी है लीनियर को और टाइम इनवेरिएंट को, तभी जाके इसको LTI सिस्टम में कहते हैं। ठीक है, तो अब मान लो ये थोड़ा बड़ा एक्सप्रेशन लिखा टाइम टाइम डोमेन में x1 डेल टी माइनस वन प्लस x2 डेल टी माइनस टू, तो यहाँ पे क्या आएगा x1 का x1 और डेल टी माइनस वन का ST माइनस वन प्लस x2 का x2 डेल टी माइनस टू का ST माइनस टू। ठीक, अब सिग्मा के ये अब डिस्क्रीट में आ गया। ठीक, सिग्मा के है तो हाँ एस के डेल टी माइनस के, तो यहाँ पे आएगा एस के का एस के और डेल टी माइनस के आएगा ST माइनस के। ठीक है, तो फिर ठीक है, तो यहाँ तक हो गया था। ठीक, तो अभी इंटीग्रेशन ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ मतलब माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एज यूजुअल, और एक्स टाउ और डेल टी माइनस टाउ डी टाउ। ठीक, यहाँ पे टी स्क्वायर की टाउ है, यहाँ पे टी स्क्वायर की टाउ लिखेंगे, तो यहाँ पे एक्स टाउ आ गया। देखो देखो देखो, एक्स टी माइनस टाउ है तो टी स्क्वायर की टाउ हो गया, तो यहाँ पे टाउ लिखोगे।
यहाँ पे टाउ सॉल्व टी है तो यहाँ पे एक्स टी लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे कर्सर करेगा, फिर डेल टी माइनस टाउ डी टाउ है, एक्स टी कॉन्स्टेंट हो गया तो एक्स टी बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डेल टी माइनस टाउ डी टाउ। तो अगर ये माइनस इन्फिनिटी से जो ये लिमिट्स होती है, अगर जहाँ पे बन रहा है हमारा इम्पल्स, उसको क्रॉस करती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ये बन रहा है माइनस टाउ पे, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है तो उसको क्रॉस कर दी है ये, तो जब भी क्रॉस करती है तो 1 होता है, और अगर क्रॉस नहीं करती है तो 0 हो जाता है। तो एक्स टी आ गया। ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया कि अगर हम किसी फंक्शन टी का हम एल टी आई सिस्टम लेते हैं तो ये ऐसे लिख के आता है, माइनस एक्स इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स टाउ एस टी माइनस टाउ डी टाउ। अब टाउ जरूरी नहीं है, कुछ भी लिख दो तो डमी वेरिएबल होता है, पहले बता चुका है, एक्स जेड एक्स टी माइनस जेड टी जेड डी जेड कुछ भी। तो फिर अब यहाँ पे ये आ गया है डेल को, अगर हम एल टी आई से सिस्टम से निकाल गुजारते हैं तो हम देख चुके हैं एस टी आता है इसका डेल टू का, और एक्स टी का एल टी आई सिस्टम से निकालते हैं तो ये आता है, ये एस टी है, यहाँ एस टी होता है या, और एक्स टी का आता है, एक्स टी फंक्शन में क्या आता है, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स टाउ एस टी माइनस टाउ डी टाउ। यहाँ ऊपर हमने देख चुके हैं ये एक्स टी एच टी जो होता है यूनिट इम्पल्स रिस्पांस ऑफ कॉन्टिन्यूअस टाइम continuous LTI system. ST is a mathematical representation of continuous time LTI system. अच्छा, ये पैरामीटर है, ये जो LTI सिस्टम का जो पैरामीटर होता है ना वो ये है, पैरामीटर समझ जाओगे ना, जो सिर्फ ये होता है उसको रिप्रेजेंट करता है LTI सिस्टम को। अब यहाँ पे प्रैक्टिकल बनाया हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ द आउटपुट ऑफ LTI सिस्टम। XT का LTI लेंगे क्या, ST का उसका ऑपरेटर, YT क्या आएगा, तो पता है YT ये आएगा, पहले बोल चुका हूँ, YT से इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स टाउ एस टी माइनस टाउ डी टाउ। अब इसको पूरे को सिंप्लीफाई करने की इसमें लिख लेते हैं, इसका ये भी चेंज हो गया, ठीक है, इसमें एक्स की कॉन्वोल्यूशन, इसको हम कहते हैं कॉन्वोल्यूशन ऑपरेटर। तो अगर ऐसा देखो तो होगा एक्स टी कॉन्वोल्यूशन एच टी, और ये भी होता है, जैसे एक्स टी कॉन्वोल्यूशन एच टी लिखा तो होता है इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स टाउ डी टाउ एक्स टाउ एस टी माइनस टाउ डी टाउ। उल्टा भी हो सकता है कि उल्टे में क्या हो सकता है, उल्टे नहीं हो सकता है कि तुम पहले एच टी का ले लो, बाद में पहले टी माइनस टाउ ले लो, बाद में टाउ ले लो, वो भी सेम रहेगा। तो जैसे ये दिया ना ए कॉन्वोल्यूशन बी इसको टू बी कॉन्वोल्यूशन मल्टी, अच्छा ये जो कॉन्वोल्यूशन होता है ना हमारी ये ऐसे, ये हमारा इक्वल होता है जो हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है मैथमेटिक्स में। तो मैथमेटिक्स में चाहे 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो, आना 6 है, वही है, चाहे एक्स टी इंटू कॉम्बिनेशन करो या एस टी इंटू कॉम्बिनेशन करो ना, आना सेम ही है, ठीक है। ओके ठीक है, तो अब देख रहे हैं कॉन्टिन्यूस टाइम एलटीआई सिस्टम। कॉन्टिन्यूस टाइम एलटीआई सिस्टम मतलब मैं पढ़ देता हूँ इधर कि convolution operator is used to write output only when system is LTI। ये कह रहा है ये जो convolution operator है ये तभी यूज होगा जब हम लोग को LTI सिस्टम दिया होगा। LTI अगर LTI सिस्टम नहीं है ना तो convolution का कोई यूज नहीं है, convolution सिर्फ और सिर्फ LTI सिस्टम का आउटपुट लिखने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक। ओके
तो अब क्या है प्रॉपर्टीज, तो ये ऊपर ही बता चुका हूँ सबको। ये देखिए प्रॉपर्टी सेम रहता है, कन्वोल्यूशन मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हाँ आगे पीछे करो, ए को बी को ए, कोई बात। ठीक है, तो अब मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है ना, वो उसी की तरह यूज करो। अगर यहाँ मान लो मल्टीप्लाई होता है, मान लो मैं यहाँ क्या हूँ मल्टीप्लाई होता है, कॉम्बिनेशन नहीं होता, तो क्या करता है एक्स टी इंटू दिस प्लस एक्स टी इंटू दिस, वही यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं ना भाई अपने को। इसको मान लो मल्टीप्लिकेशन है और ऐसे लगा दो, इसका क्या होगा, सब तीनों इंटू में, तो किसी को भी पहले इंटू कर लो, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब देखो यहाँ पे एक एरिया है, ये ग्राफ है, इसका एरिया है A1, ठीक, ग्राफ का नाम है एक्स टी। ये एक है, इसका है एरिया A2, इसका नाम है एच टी, विड्थ ये है, ठीक, ऐसे लिखोगे एरिया माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एच टी टी, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एच टी टी है, ये इन दोनों की लिमिट, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। अब बोला जाए इन दोनों को इंटू कर दो तो क्या आएगा, ये इनका ऑपरेटर है, ये इन दोनों को इंटू कर दिया क्या आएगा, इंटू कर दिया, या हम क्या कह रहे हैं कॉन्वोल्यूशन ले लिया, दोनों का कॉन्वोल्यूशन ले लिया, तो लोअर लिमिट्स ऐड हो जाएंगी L1 प्लस L2, अपर लिमिट्स ऐड हो जाएंगी U1 प्लस U2, ठीक, और विड्थ तो अपने आप ही ऐड हो जाएगी जब ये दोनों ऐड हो रहा है, तो L1 प्लस L2 यहाँ पे U1 प्लस U2 अपर लिमिट, और विड्थ क्या हो जाएगी डिस्टेंस W1 प्लस W2। एरिया इनका मान लिया है A, ए हमारा क्या है कि A1 इंटू A2 करके आया है A, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी निकल के आती होगी एक्स टी कॉन्वोल्यूशन, एच टी हमें देता है Y2, वो बहुत तगड़ी है भाई ये वाली, मैं भूल जाता हूँ कई बार। तो मान लो एक्स टी में टी का हम शिफ्ट करते हैं और एच टी में हम बी का शिफ्ट करते हैं, ठीक है, तो जो इनका रिजल्टेंट आएगा कॉन्वोल्यूशन के बाद, इसमें ना इन दोनों की शिफ्ट का सम होगा, मतलब यहाँ पे माइनस ए प्लस कर दो, यहाँ माइनस बी प्लस कर दो, ठीक, तो यहाँ माइनस ए है, यहाँ माइनस बी है, तो यहाँ पे टी माइनस से माइनस बी होगा। अब यहाँ पे मान लो ये सिंपली दिया एक्स टी कौन एक्स टी कॉन्वोल्यूशन एच टी, तो यहाँ पे और यहाँ मान लो माइनस टी है और यहाँ भी माइनस टी है, तो यहाँ भी माइनस टी होगा। अब ये मत कह देना कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो नहीं नहीं वो नहीं होगा, यहाँ माइनस आएगा। ये एक टेबल है सर बताए हैं कि एक्स टी है, एक्स टी है, एच टी है और इनका रिजल्टेंट वाई टी, ये इवन, दोनों इवन तो इवन, एक ऑड तो ऑड, एक ऑड तो ऑड, दोनों ऑड तो इवन, मतलब अगर इवन कब आएगा, जब इवन और दोनों, ठीक, या फिर दोनों ऑड। माउस सिलेक्ट रहा हूँ पता है, दोनों इवन हो तो इवन, या वो दोनों ऑड है तो ऑड, ठीक है, और अगर कहीं पे भी तो हटा ही देते हैं, तो माउस इसका जो बनाना इरेजर थोड़ा सा ना देखो, मीटर ही नहीं आ, पता नहीं कौन सी इंग्लिश लिखा हुआ है। और अगर हम लोग को ये चाहिए कि हमारा ऑड हो, तो फिर हम लोग कहेंगे इफ एनी वन इज ऑड,
अगर ऑड है तो कोई भी एक ऑड हो जाएगा तो हम लोग कह देंगे कि वो ऑड है, ठीक है। और इवन चाहिए तो भाई हम लोग को दोनों या तो इवन हो या तो हमको दोनों तुम ऑड दो, तब जाके हम लोग कहेंगे कि हाँ जो हमारा रिजल्टेंट आएगा अगर आपका वो हमारा इवन रहेगा, ठीक है। तो एक था हम पढ़े थे कि कंप्यूटर में पढ़े थे, याद होगा शायद तुम लोगों को कि यहाँ से देखो इसे 01011100 स्टार्टिंग इससे होती थी 00110101 ऐसा था। और एक और चीज है इसमें, जैसे मान लो दोनों इवन है ना तो दोनों इवन रहेंगे, ठीक है। और अगर दोनों एक भी ऑड हो गया, ठीक है, तो ये चेंज होने की कोशिश करेगा, ये ऑड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी फिर पहले बता चुके कि कोई एक भी ऑड हो गया तो ऑड हो जाएगा, और अगर दोनों ऑड हो गए तो इवन जाएगा। तो ये हो गया, वापस आते हैं। ठीक है, तो फिर अब ये देख लिया कि जब दोनों को कॉन्जुगेट हम लोग कर रहे हैं एक्स टी को तो वाई टी आ रहा है, तो अब मान लो दोनों में हम लोग ने टाइम स्केलिंग करी, ठीक है। एक्स टी में ए से टाइम स्केलिंग करी और एच टी में भी ए से टाइम स्केलिंग करी, दोनों में से ए से टाइम स्केलिंग करी, तो वाई टी जो रिजल्टेंट उसमें क्या होगा, देखो होगा उसमें ये कि वन पॉइंट मॉडलर से नीचे आ जाएगा, ठीक है, पर अंदर भी ए रहेगा। जैसे हम लोग ऐसा ना लगे किसी को कि जब वन पॉइंट ए यहाँ आ गया है नीचे, यहाँ तो ए नहीं है, ये ऐसे लिखेंगे, पर ये नहीं है, दोनों में ए रहेगा, ठीक है, दोनों में ए रहेगा। ये कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि हमने जैसे इम्पल्स फंक्शन में होता था, यही बोल रहा पहले, ठीक है। तो हो रहा है, हाँ, तो ये देख लिया, ठीक है। अब दूसरा, मान लो हम एट्रीब्यूट स्केलिंग करते हैं कि बाहर से एक्स टी ने ए का इनटू किया और इसमें वाई टी और एच टी ने बी का स्केलिंग किया, तो जो रिजल्टेंट जो आएगा उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा ए बी, ठीक है। यहाँ ए इंटू यहाँ बी, मल्टीप्लीकेशन है ए इंटू बी, ये पता है। अच्छा, डिफ्रेंशिएशन वाले में भी यही होता है यार कि ये तो एक में अगर डिफ्रेंशिएट किया और एक में नहीं किया तो एक बार डिफ्रेंशिएट है इस पूरे में, तो यहाँ वाई टी में भी एक बार डिफ्रेंशिएट होगा। मान लो यहाँ पे एक बार डिफ्रेंशिएट किया, यहाँ भी एक बार डिफ्रेंशिएट किया, तो यहाँ पे रिजल्ट में दो बार डिफ्रेंशिएट होगा। जैसे कि हम लोग इसमें देखते थे ना कि अगर इसमें ए से शिफ्ट किया है, इसमें बी से शिफ्ट किया है, तो यहाँ पे दोनों का जो सम करके जो आएगा शिफ्टिंग वो होगा। सम से मतलब क्या लग रहा है, माइनस है पर सम क्यों बोल रहे हैं, सम इसलिए कि माइनस ए का सम है माइनस बी का सम है। मान लो ये वाला कि अगर एक्स टी प्लस टू है, कॉन्वोल्यूशन एच टी माइनस वन, ये आएगा वाई टी प्लस टू माइनस वन, तो आएगा वाई टी प्लस वन। तो इसीलिए मैंने बोला है कि सम ही होता है, ठीक है। तो ये ना याद रखना कि माइनस माइनस वाला ये स्विच होता है, निकल जाएगा। हाँ, अब यहाँ पे मान लो दो बार इसको डिफरेंशिएट किया, इसको तीन बार करा, तो दो प्लस तीन तो पाँच, यहाँ पाँच बार आएगा। देयर इज अ एक, तो हो रहा है, हाँ। तो देखो ये सब जो है उसको पढ़ लो, पर ये याद रखो कि जो एक्सप्रेशन होता है ना, इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से टी अंदर कुछ भी हो, इसको मैं पहले बता चुका हूँ, रनिंग इंटीग्रेशन होता है। ये सिंपल इंटीग्रेशन नहीं, ये है रनिंग इंटीग्रेशन। तो यहाँ नीचे वाला फिक्स्ड होता है, ऊपर वाला ये वेरिएबल होता है अपर लिमिट, और नीचे वाला होता है फिक्स्ड, मतलब जो लिमिट है नीचे वाली फिक्स्ड है, तो इसको हम लोग कहते हैं रनिंग इंटीग्रेशन, ठीक है। तो जैसे यहाँ स्टैंडर्ड रिजल्ट है, तो इसको देखते हैं।
हाँ कि अगर, हाँ देखो, अगर एक्स टी कोई भी फंक्शन हमारा है उसको हम कॉन्वोल्यूशन लेते हैं इम्पल्स फंक्शन के साथ डेल टी के साथ, तो वो फंक्शन एज इट इज सेम आ जाता है। ये प्रूफिंग है, देखना। पर तुम्हें क्या रखना है, अगर हम लोग एक्स टी का कॉन्वोल्यूशन करते हैं डेल टी के साथ तो हमारा फंक्शन ही आ जाता है। तो मान लो अगर एक्स टी शिफ्टिंग कर देते हैं तो अब पहले तो ये पता है कि हमको कि एक्स टी आएगा सबसे, पर एक्स टी में शिफ्टिंग कितनी आएगी, दोनों का सम जो ऊपर बढ़ा था माइनस है माइनस टू, ठीक। अब ये होता है कि अगर डेल टी कॉन्वोल्यूशन डेल टी करेंगे तो डेल टी ही आता है। जैसे यूटी होता है ना, यूटी तो होता है यूटी इंटू यूटी इंटू यूटी यूटी यूटी, तो यूटी आ जाता है। बोल के तो समझ आ नहीं रहा होगा, मेरे पास वो है नहीं राइटिंग टाइम। इसको सोच रहा हूँ क्या ही मंगाऊँ मैं उसका अर्जी का, तो सही से खर्चा होगा। तो उससे बड़ा फायदा रहता है टैबलेट मंगाने का। सोचे पर इतना चोर नहीं पालना है हमको, टैबलेट टैबलेट लेके काम चल रहा है ना। ठीक है, तो ये नेस्टेड जो है कि अगर डेल्टी तुम्हारा एन टाइम्स होगा, ठीक है, मान लीजिए ऐसे लिखते हैं हम लोग ये एन टाइम्स, ठीक है, और एन टाइम्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो भी डेल्टी ही आएगा। तो ये बहुत ही फायदेमंद है, काफी अच्छा रिजल्ट है। तो इसको देखते हैं, ठीक। अब यहाँ पे है, अब एक और बढ़िया इंपॉर्टेंट यूटी वाला। तो तुम्हारा कोई भी फंक्शन एक्स टी है, अगर वो यूटी से होता है मल्टीप्लाई तो इंटीग्रेशन आ जाता है, और ऐसा अगर इंटीग्रेशन नहीं आता है रनिंग इंटीग्रेशन आता है। तो तुम यहाँ पे देखो, ठीक है, और इन दोनों को देखो, देखो माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे, यहाँ टी है ना, माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे टी है, यहाँ भी टी है, यहाँ माइनस इन्फिनिटी जो कि फिक्स वैल्यू है, यहाँ भी फिक्स वैल्यू है। यहाँ मान लो कैसे लिख सकते हैं, टू इंटू टी, थ्री थ्री टी माइनस फोर टू टी, ये होता है रनिंग। तो जब भी हम लोग उससे करते हैं यूटी से कॉन्वोल्यूशन करते हैं हम लोग जब भी, तो हम लोगों को रनिंग इंटीग्रेशन मिलता है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, ये मैं लाया हूँ पिटारा, तो ठीक है इसमें। हाँ, मान लो अगर एक्स टी है और अगर हम इसका कॉन्वोल्यूशन कर रहे हैं यूटी से, तो सबसे पहले हम लोग को ये इंटीग्रेशन लिखना है, इसमें माइनस इंफिनिटी से टी, अंदर क्या है, अंदर वही एक्स्ट्रा आ जाएगा, कोई भी ले लो, डी टी तो नहीं रहेगा, ठीक है। तो ठीक है, अब यहाँ और रिजल्ट देखो, मान लो इंटीग्रेशन ऑफ डेल टी इंटू यूटी है, तो ये देखो ना यूटी से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों वाइस वर्सा अपनी प्रॉपर्टी से प्रूफ करेगी, इससे इंटीग्रेशन हो जाएगा, और डेल टी का इंटीग्रेशन बाय यूटी होता है। और ये भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है कि भाई जब किसी भी टाइम किसी भी फंक्शन का अगर डेल टी से कन्वोल्यूशन होता है तो वही फंक्शन नेगेटिव आ जाता है। तो एक दूसरे को इम्प्रूव कर रहा है। और नेस्टेड वाले का मैं बताया हूँ कि मान लो अगर यूटी कॉन्वोल्यूशन यूटी है तो इसका इंटीग्रेशन आ जाता है ना, तो इंटीग्रेशन यूटी का आरटी रहता है। आ, जैसे एक चीज बताता है, ठीक लगेगा, छोटा सा कोई, हाँ, तो कलर होता है, ठीक है, जो ये हमारा ये स्टेप फंक्शन, ये है यूटी,
तो इसका हम अगर डिफरेंशिएशन देते हैं तो वो आता है इम्पल्स, और अगर हम इसका इंटीग्रेशन देते हैं तो आता है रैंप रैंप फंक्शन। इम्पल्स आता है जब डिफरेंशिएशन करते हैं, और जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा आता है रैंप। ठीक, अब यहाँ भी देखो यू टी माइनस जी कॉन्वोल्यूशन ये, तो अब पता है कि यू टी इंटू यू टी है, इंटीग्रेशन आएगा तो आर टी लिख दिया और शिफ्टिंग से कर दिया। अब तो समझिए क्या होगा, इस वाले को देख लो, इस वाले का यू टी है, आर टी का इंटीग्रेशन करने पे वो आता है पावर वाला, और पावर जो होती है वो उसको ऐसे लिखते हैं टी स्क्वायर बाय टू इंटू यू टी। ये जो पावर वाला होता है इसको हम लिखते हैं टी स्क्वायर बाय टू इंटू यू टी। ठीक है, और जो पावर आती है ये होता है रैंप फंक्शन का इंटीग्रेशन। ये होता है इसका इंटीग्रेशन रैंप का पावर। तो टी स्क्वायर बाय टू यू टू होता है, ये याद रखिए, इससे इसी से ये लिखा गया है। जैसे इसमें क्या लिखा जाए कि ये शिफ्टिंग करा रहे हैं इसको, है ना, यू टी माइनस ए कन्वोल्यूशन आर टी माइनस ए, तो टी आ गया, टी को लिख दिया ऐसे कि अब दोनों में टी माइनस, और दोनों में जो भी है ना टी माइनस ए और टी माइनस बी, वैसे इसमें दोनों में माइनस से माइनस बी है, तो जब इसको तुम इसमें लिखोगे ना टी स्क्वायर और यू टी में, तब भी इसमें माइनस है माइनस बी है। आओ भी जरा सोच रहे हैं कि आओ इंग्लिश में ट्राई करते हैं, तो थोड़ा बहुत क्या पता सुधर जाए, ऐसे बहुत जानता है। तो convolution of two rectangular pulses has same duration. So this is pulse xt given, okay, they both have same duration, and this is pulse ht. So if you want to write the this pulse in terms of equation, we can write it like this: a ut minus a ut minus a. So if you want to simply write this, first of all think that it is a, don't think, assume it to be the amplitude to be 1. When you assume its amplitude to be 1, now you simply write it like ut minus capital T. Okay, now multiply it by amplitude A. Same process here also. Assume, don't assume this B amplitude, okay? Assume it to be 1. Now you can write simply ut minus capital T as above, and now multiply it by amplitude B, okay? If you want to find the convolution of both of these pulses, so what will be the result? Okay, so this is the derivation of that. What will be the result of if we take the convolution of both of these impulse, both of these signals, both of these pulses, rectangular pulses. Okay, so I'm not going into the derivation. I'm going to the part that we have to remember in the exam. Okay, so if you have given this xt, which have a in duration of 0 to t and amplitude a, and a pulse st that have amplitude b, and they both have same duration. The point that we have to note is that they both have same duration. Okay, so now this is a unit step function. Let's know unit step like this. This is also a unit step. Okay, so if we are multiplying, it will give us this, assume it to be 2. What we have to remember है
इंग्लिश बहुत झंड है भाई. Okay. So we have to remember that if two square pulses, okay, or you can say two rectangular pulses with same duration. If we take the convolution of two rectangular pulses of same duration, it will give us a triangle. Okay, it will give us a triangle. But what will be the duration of the triangle? What will be the lower point and the maximum point? That we don't know. The simple shape of the resultant function will be a triangle. Okay. So now first slope. If you want to write the slope of that triangle, the slope will be the multiplication of both of the amplitude. Okay. So this is an increasing slope, so the slope will be plus AB, and this is decreasing slope, so the slope will be minus AB. Okay. And what will be the peak point of this triangle? The peak point of this triangle will be multiplication of both the amplitudes into the time period. As the time period is same in both of the impulses, so it is simply t. So for example, the time period is 2 and A is 3 and B is 4. Let me write. A is let 2, B is 3 and T is 4. So what will be the peak point of the resultant triangle? It will be 6, 4, 24. Okay. So if you want to directly draw the resultant triangle by seeing the both impulses, we can draw, but we have to remember some short trick and some properties. So if you want to write the upper point of the resultant triangle, so the upper point of the resultant triangle is the sum of both the upper points of the impulses. So here in both the pulses, the upper point is t, so t plus t is 2t, and if we want to the lower point in the resultant triangle, the lower point in the resultant triangle will be 0 and 0. Okay. Now where is the point? What is the point where there is a change of slope? There is a plus AB slope and there is a minus AB slope. So do remember that this is the same duration condition. In the next case, the duration will not be the same. Okay, but what you have to remember that in both pulses xt and st, whoever has the less time period, okay, we subtract the less time period from this upper point. Okay, in for example here we are going to learn about this when both have different duration. So the one which have the less time period, this is t1, so t1 is less than t2, so we subtract from this maximum. Just focus on the cursor first of all. We subtract the lowest time period from the maximum point, so we subtract t1 from t1 plus t2, so we get t2. Okay, and now in the lowest point we add the smallest time period. So this is lowest point. Lowest point is 0, so we add t1, we get t1. So same steps are using here. We subtract t from this 2t, we get t, and in other words you can also say that we add t in the lowest point. Okay, in this when we both have the same duration, then we can add this time period, smallest time period in the lowest point, or subtract the smallest time period from the upper point. ठीक है, तो अब क्या है, अच्छा इंग्लिश चल रहा था. So now if we take the second example, okay, so this is xt pulse and this is st pulse. So
xt amplitude is plus a and st amplitude is minus a. So if you want to draw the resultant of after on taking the convolution of both of these pulses, first of all we know that we get a triangular pulse. Okay, now we want to what is the peak point of the resultant triangular pulse. So as I have told you, it is a into t into time period, means both multiplication of both the amplitude into time period. So here xt amplitude is a and yt amplitude is minus a. So the peak of the resultant triangle will be minus a into b into t. So it is minus, so the triangle is drawn like this downwards. Okay, and first it is decreasing slope and then increasing slope, and the slope is the multiplication of both the amplitude. So the amplitude is multiplication of both the amplitude is minus ab. Okay, so first it will minus ab and then plus ab. Now if you want the upper point of the resultant triangle, the upper point is the summation of both the upper points. Okay, and the lower point is the summation of both the lower points, and the point at which there is a change of slope, we will find it by, it is in this both have same time period. So take any one of them. So take this and subtract it by the subtract it by the upper limit. So the time period is t, subtracted by 2t, we get t. Or you can say that take this time period t and add in the lowest point. So we add t, we get here, or we can subtract t from this upper limit. Now, as I have told you the basic by these two examples, so I am skipping these two. You can take screenshot if you want. Okay. So now we heading towards the next topic, the convolution of two rectangular pulses having different duration. Okay. First of all, the thing that we have to remember is that when two rectangular pulses are when we take convolution of two rectangular pulses which have a different time period, then the resultant is a trapezoidal. The resultant shape of the pulse will be a trapezoidal shape, trapezium. Okay, so I'm skipping the derivation. If you want to see the derivation, you can take screenshot and see it later. So I'm going to the questions. First of all, this shortcut. What we have to remember. So this is a xt pulse, rectangular pulse xt, and this is another rectangular pulse st. The duration, the time period of xt is t1 and the time period of ht is t2. Okay. So as you know, by seeing the pulses, we know that xt have a smaller time period, that is t1. So t1 is smaller than t2. Okay, and we also know that when we take the convolution of both of these pulses, we get a shape of trapezoidal shape. We get a trapezoidal shape. Okay, so simply what we should do first, I'm trying my best, draw like this without numbering anything, just draw. Okay, now okay. Now I just draw the shape of the resultant. Now I will point out this change of slope points. This is increasing slope, then the slope is 0. This is slope 0, then decreasing slope. These are the break points. These are the points, break points. Okay. So what is the lower limit of the resultant? 0 plus 0. So I simply write 0. Listen, I know that while seeing these pulses, I know the lowest point is 0. So I joined it by 0. Okay. But if you want to, let me write it.
Let me take the app. Leave the app. So, yeah. Now, okay, let me do it right here. We are drawing the resultant of the convolution of both of these rectangular pulses which have different duration. So we know that the resultant will be a trapezoidal. But I don't know the lowest point is 0, so I draw like this. Okay, what you should do. So we are going slow right now because we are learning. So what is the lowest point of the resultant? Sum of the two lowest points, so it will be 0. So I know 0 cannot be here, so we will shift like this. But first draw. The upper limit is t1 plus t2. Difficult. This is t1 plus t2. Wow. What is this? Oh. And these are the breakpoints, change of slope. So what is the point here? What is the point here? So take the uh, time period which is smaller and subtract that time period from the upper point. So this is t1 plus t2. So subtract t1 from it, you will get t2 here, and this is the lowest point. Okay, so add the lowest time period in the lowest point. So 0 plus t1, we get t1 here. Okay, and the slope of this is a multiplication of both the amplitudes, so it is plus ab plus ab, and this is decreasing, so it is minus ab. Okay, the slope is here 0, you can see. Okay, that we all have to know. Okay, so I'm not drawing right now, it will take a lot of time. So let's jump to the second example. Here the rectangular pulse xt have a duration from -1 to 3 and have an amplitude of 4 in positive plus 4, and the second rectangular pulse, that is st, have a duration from 2 to 9 and and the amplitude is -3. Okay, so the first point that we all have to know, we notice that the time period of xt is 4 and the time period of st, the second pulse, is 7. So both of the time periods are different, so we get the resultant in a trapezoidal shape. Okay, now what is the lowest lower limit of that trapezoidal shape? So we multiplied the both lower points of both of these pulses, that is -1 plus 2, we would get +1 here. Okay, and what will be the upper limit of the resultant trapezoidal shape? It will then addition of both of these upper points from the two rectangular pulses, that is 3 plus 9, that is 12. Okay, so now we make by dotted line the breakpoints, the where the slope is changing. So what is, so xt is lower, x1 xt has lower time period, that is 4. Okay, okay, so we subtract 4 from the upper limit and we add 4 in the lower limit. We subtract 4, this is the upper limit, so we subtract 4 from it, we get 8, and this is the lower limit, that is 1, so we add 4, that is 5. Okay, now if you want to write the if you want to write the slope, so the first is slope is negative, decreasing, then 0, then increasing. So the slope is the multiplication of both the amplitudes. So
the first amplitude is 4 and the second amplitude is minus 3. So the multiplication is minus 12. So first it will go down by minus 12, then 0, then it is up, so plus by minus 12. Okay. Now I have forgot in the previous example that the amplitude of the resultant graph, amplitude of the resultant graph is the multiplication of A into B and into time period. The time period of lowest one means T1. See this example. If you want to mark the amplitude of the resultant trapezoidal shape, so we multiplied by 4 and minus 3 and again 4. Yes, so this, okay. As I have told you that you remember now, let me change the color. The amplitude of the resultant is like this: A into B into T, as we have seen earlier. These are the multiplication of both the amplitude, and this is the time period when both have same time period. So here, when both of the pulses do not have same time period, the thing remains same with amplitude multiplication of both the amplitude, and at this place T we write the lowest time period. This is 4 and this is 7. So we write T1 here. Okay. So A here is 4 and now we multiplied by the minus 3, and then we take the lowest time period. It is 4, it is 7. So we take the lowest one. Total gives us 4. Now if we multiply, it will give us minus 48. So this is how we write the resultant amplitude of the trapezoidal shape. So this is a very important topic that we have covered when multiplication of two rectangular pulses with same duration and multiplication of two rectangular pulses with different duration. Okay, and do remember the lower limit concept, upper limit concept, slope concept, peak point concept, amplitude concept. We are going to differentiation of signal. Okay, there are two types of signals: sinusoid signal and non-sinusoid signal. Up to slope variation beyond. So, okay, when xt is like this, have zero slope, means slope is zero. Part of time axis, d by dx slope. Okay, now this is going. Yes. So, okay, this is slope zero. Slope is zero. The differentiation is part of time axis. Okay, you will get to know about this when you see with the example. This is plus slope. Slope is plus 1. Differentiation is plus. Okay. So this is the differentiation of signals. So this is a signal with slope 0. So the differentiation of this, the part of the time axis, and we get to know about this when we see the examples. Okay. Now the second one, when the slope have a when the line have a slope of plus m, and then the differentiation is like, okay, okay, this is not that. Okay. When you see a line tilted, means it is having a slope. When you see a line tilted like this, having a slope plus 1, plus n, then what you have to do in the exam, I will not going into the details how the result come. Okay, okay. Take that line and make it with slope 0. The result is this. The slope is not slope anymore. Its slope is 0, but the value is m.
When you take the differentiation of this line, which is having a slope m and which is tilted, so take that line, make it straight with slope 0 and write the same. For example, the slope is 2, so write 2 above the line, which will convert into the amplitude of that line. What I'm trying to say is that if you see a slope like this, it is 2. So when you differentiate it with respect to t or with respect to anything, you will get the resultant as this with an amplitude of 2. So this slope and this amplitude are same. That's what I'm trying to say. So if you just remember that, it will help you in the examination, in the big questions where there are a lot of change of slope going on in a single graph. When you see this one, make it straight and write the same slope above it, which will convert it into this line amplitude. And when you see upward, which is slope at infinity and with the amplitude a1, then the differentiation is just a1. And when you see downwards with the and with the length is a2 with the slope minus infinity, then downwards impulse minus a2. So let me draw. So when you see this, this is A and this is the tracking. First always track the graph. Okay, when you take the differentiation of this graph, what I'm seeing, first this is having a slope 0, so I make a slope 0 line. Okay, part of the time axis, this is part of the time axis. Now it is a downward of A, which minus infinity. So I make an impulse like this with minus A. Now again zero slope line, time part of the axis. Now I see a upward line with a length A, so I make a upward impulse with A. Now again the zero slope line, so I make a zero slope. Now this downward line by length A, so I make a downward slope which is minus A. So that was I was trying to say about this. This is the example of both of these, and we see more example in the next page. If you know what I'm trying to say, this is very important. If you know how to do it, you will do it very fast in the exam without thinking about anything, and it will save us a lot of time. So this is the question. Okay, so our unit impulse graph is given to us, and the question is that we have to and the question is that we have to find the differentiation of this graph. So what how we see how we start the process of solving this graph differentiation. First see, we have a upward line with length 1. Upward line means the slope is plus infinity. So we draw a impulse of plus 1 like this. Focus on my cursor, and then we see a line with slope 0. So we take that line and put it right here. For imagination, what we have done after this, after making an impulse of length 1, we grab that line with slope 0
and put it right here with the time axis, part of the time axis. Now this is this is the question. This is the type of question I was talking about, in which there is a lot of change of slope in one graph. First of all, track the graph by arrows like this. You can see from left to right. Now mark the slope of each and every graph. Slope is 2, or it is 6 by 12, 2, plus infinity slope, 0 slope, minus infinity slope, 0 slope, plus 5, or 2, 2 by 2 by 10. Okay, this is 10. 2 by 10, 5, and 0 slope. Okay. You can also see like this, when this 2 is multiplied by this 5, we reach a point which is equal to 10, and it is in the downward direction, so we'll see minus 10. So this graph will be given to you, and the question will ask you to find the differentiation of this graph xt. So first, see, this is a line with 0 slope, so we make a line with 0 slope like this. Then we see a line with having a slope of plus 2, which is a tilted line. So grab that line, make it straight, make it like a line with 0 slope, and copy the slope above it, which will become the new line's amplitude. Okay, I grab this line by my hand and make it straight like this, and just copy the same slope above it, which will become its slope. Now I see a upward of plus 18. Okay, okay, this is 12. This is 12. I see a upward of plus 6. So I make an impulse of plus 6 here. Now I see a line with slope 0. So I grab this line and put it uh, on the time axis like this. Now after that I see a negative infinity slope downwards with a length of 6 plus 12 plus 10 minus 28. So I make an impulse of minus 28. Now I see a line of 0 slope. I grab that line and put it on the time axis. Every time I see a line with a 0 slope, I grab that line and put it on the time axis, part of the time axis, and time axis is on the x-axis. Now I see a line with a slope plus 5, which is a tilted line. So I grab that line, make it straight, like a line of 0 slope, and then I copy the slope of that line, and that slope will become the amplitude of the new line. This slope after the differentiation will become the amplitude of the new line having the slope 0. Okay, and then I see a slope 0, and it is already on the time axis, so I don't change it. Now this sawtooth graph. Okay, so first I see this straighted line is slope a by t. How the slope is a by t? This is a, this is t. So if we want to reach a by t. So the slope of this line is a by t. How? The slope is uh, delta y by delta x. So a minus 0 is a divided by t minus 0
uh, ignore the negative sign. Okay, so we get slope a by t. So first we see a line of slope a by t, which is always tilted. So I grab that line and make it straight with a line of zero slope, and the amplitude of that line will be slope a by t. The amplitude of the new line is the slope a by t, and as I can see, it is repeating. Okay, let's go step by step. First, I draw this. You all now see a downward line with a length of minus a at a point minus 2t. So I make a impulse in negative with length minus a at the point minus 2t. Then again I see uh, a line with a slope of a by t. So I will grab that line and make it straight with a slope and make it straight like a line of zero slope, and the amplitude of that line will be slope of this line a by t. So and then again I see a downward length of minus a, so I make at minus t, so I make a negative impulse with length minus a at the point minus t. And now if you repeat that process, you will see you will get a straight line like this, which is we call DC, which amplitude is a by d, and we get a counter impulse like this. Okay? This is also the line. So track that. Okay, see my cursor, track this graph like this. Okay, arrow by arrow. Now I see a zero slope line and make it to the part of uh, time axis. Now I see a upward line with a length of plus 2a. So I make a impulse of plus 2a at point t. Now I see a zero slope line. I grab that line and make it to a what is the make it the part of time axis. This is it. Now I see a downward line of minus 2a. So I make a impulse of minus 2a at the point minus t by 2. Here t minus t by 2. Now I see a line with slope 0. So I grab that line and put it on the time axis to make it a part of the time axis because the slope is 0. Now again I see a length, upward length of plus 2a. Upward length means the slope is plus infinity. Now at this 0 point I make a impulse of plus 2a. Okay, again I see this 0 slope line, so I grab that line and put it on the time axis. So if you repeat that process, this is the result that you get. So now we see integration of signals. This is integration of signals. Okay, so integration of two signals. There are sinusoidal signals and that are not sinusoidal signals. So in the non-sinusoidal signals, there are two parts, having only step variation and others. First we see the graph which having only step variation. Okay, case 1 when x is having only step variation. So this is the graph. Okay, the point. So first of all, mark the point of breakpoint. Breakpoints are the point where there is a change of slope. Okay, so first of all I mark 3 points 0, 1, 2. Yeah. Okay, I am a man. I am coming from infinity. Okay, this is running integration. I am running integration from minus infinity to 0. So from minus infinity to 0, there is no graph. So the area of minus infinity to 0 is 0. So I just put a point here at 0. Now I am running integration from minus infinity to 1. So from minus infinity to 1, I see area of, this is 1, this is 2, I see area of 2. So I mark 2 here. Okay, at point 1 I see area 2, I mark 2 here.
Again, I am running integration from minus infinity to 2 now. Now the area that this man, which is I myself, observe that the first area is plus 2 and the second area is minus 2. So again I getting an area of 0. So again I will make a point on 0 and then I join these lines, these points. Now this is the second, this is the man. Coming from my, first of all, the first step, if this graph is given xt and the question was that to find the integration of this graph. So it is a step graph. I have noticed that it is a step graph, no other operator is used rather than the step. And first of all, I point out write the breakpoints 0, 1, 3, 4. So I make a new graph like this and I point 0, 1, 3, 4. Now I run from minus infinity to 2. I see the area I get is 0, so I make a dot on point 0. Now I run from minus infinity. I am running integration from minus infinity to 1, and then I see a area of 2. So I make a dot on in front of 2, this like this. Now I am running integration from minus infinity to 3. Now first we get this area 2. Now this 2 and 6, so 12. Okay. So, yeah, 2 and what this area? Okay, we are getting 11. Okay, so at 3 we see if I running integration from minus infinity to 3. So first here I got the area of plus 2. Now dot 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 we match it to point 1. This length is 7 and this length is 2. So we multiply that. 7 into 2 is 14. Okay, so I get an area of 14 when I reach at point number 3. Okay, okay, now I get this is 2 and this is 6. So if we are running integration from minus infinity to 3, first we get the area is 2, so we write 2. Now plus we want to find the area of this square. So this is 1, this is 2, and this length is 6. Okay, this length is 6. So this is 6 and this is 0 point. So this whole length is 6 and the difference between them is 2. So 6 into 2 is 12. Okay, so we write 12 and plus we already get this area 2, so the resultant area will be 14. So we mark the point 14. Okay, now I will have 10. Now if I am running integration from minus infinity to point 4, first I get this area 2, so I write plus 2. Now again I get area 12, so I write plus 12. Now this is negative area. Okay, so this is 1 and this is minus 3. So I subtract minus 3. So 14 minus 3 is 11. So at point 4, I mark a dot at 11 like this. As you can see, I mark a dot at 11. We are going to see another example. Hope that the concept is clear to you. Okay. So now this case is different because in this case we have ramp also with the unit step. So in this type of
questions, we break this whole graph into different parts. Like -1 to 0, it is RAM. Minus, okay, t less than -1, it is 0. From -1 to 0, it is, we write the equation of this line. Then this, then this, then this. Okay, and then so we break in different point. Now we find the area of different uh, parts, like less than t less than -1, minus infinity to t to 0. From -1 to 0, we write this. So first, like I'm running integration from minus infinity to 0, so I add the 0 plus the area of this triangle. Now I'm running integration from minus infinity to 2. Okay, I'm running integration. Okay, so I'm running integration from minus infinity to 2. So I will add this 0 and area of this triangle and this rectangle. Okay, now I'm running integration from minus infinity to 3. So add the 0, area of this triangle, this square and this triangle. As you can see, we add the 0, area of triangle, rectangle and the new triangle. And again, if you repeat the process, same triangle, rectangle, area of triangle, and the new -2p is about this area. Now how can we calculate the convolution using standards? So we have to remember these two that we have already discussed, that the convolution of del t will give us the same function, and with convolution of ut it will give us integration of running integration of that same function. Okay. So rectangular pulse having same duration, triangle, that triangular pulse which have different will give a trapezoidal. Okay. So this is graphical method. Okay. So these are some methods to calculate convolution. We already see two methods, okay, above. So the third method is, okay, I'm skipping this one. This is not important for us. The main method is this, the timeline method that we mostly use in the question to solve. This is the basic formula that of convolution: xt convolution st integration minus infinity to infinity x tau st minus tau. Okay, and given that xt, step 1 given xt and st, step 2 write x tau and st minus tau. Third, make the timeline of the x tau versus tau and xt minus tau versus tau. Now vary t and determine the integration. Okay, this is graphical method. This is also not we are going to use in the examination, but if you want to see, we'll go through. First we draw the graph of xt versus t, then we draw the graph of st versus t. Okay, now step 2, we draw x tau versus tau and s tau versus tau. Now we make a graph of st minus tau versus tau, or you can uh, do all these steps in a single step which is written here. First draw the graph of s tau versus tau. Okay, now fold the graph. So when you fold the graph, it will be the graph of s minus tau versus tau. Now when you right shift the graph, it will be h t minus tau versus tau. Okay. Now vary t and calculate the integration. So this is very important. Before solving the problem of a convolution,
we have to decide the range of the convolution. Okay, so this is question number 1. This is xt, this is t. If you multiply both of them, xt convolution from 0 to t, okay, we see in different method. Method 1 is that break this graph into equation, break both of the graph into equation and multiply the equation, we get the result like this. Okay, and mention the range of the convolution. We want to find the range of the convolution. So this is between 0 to infinity, 1 to infinity, 1 to infinity. Okay. Okay. This is method number 1. From 0 to infinity is pt, from 1 to infinity. Okay, fuck it, I'm not explaining it, I don't get it. Okay, the second method is not important. This is the main method. Focus on this. Third method, the timeline method. This is the only method that I am going to use in the examination. xt is t, 0 to 1 and 0 elsewhere. I have given the graph of this. If I break that into equation, it is t from 0 to 1 and 0 elsewhere, and st is 1 from greater than t, that is ut, and 0. This is the property of a unit step function ut. So I write now x tau. So this is tau. I replace t by tau. Now I replace t here by t minus tau. So t minus tau and 0 elsewhere. T minus tau. Okay. Okay. So I write tau here in the x. Replace t by tau simply. Now this is tau. So if you break this, the critical point is p is equal to tau. Okay, p is equal to tau, and it is negative, so we have to go from minus infinity to t. And you should know when the variable is negative, we move from minus infinity to t, and if it is positive, we move from the breakpoint to infinity, and if it is negative, we move from minus infinity to the breakpoint. So we move from minus infinity to the breakpoint is t. Now 0 also. Now we make a timeline of this xt. It is x tau, 0 to 1 tau. Now this minus infinity to t, that is 1. We make a minus infinity to t. Now we don't know that this t is greater than 0 or less than 0 or greater than 1 or less than 1. So we make conditions. Okay, the first condition that we take that t is less than 1, so we make this. Now when t is less than 1, now we are going to find the area when t is less than 1. So minus infinity to infinity, the area is 0, so we get 0. Now if this t is between 0 to 1, between 0 to 1, okay, we get tau. 0 to 1, we get tau from 0 to t. 0 to t, we get tau dt. So we get t square by 2. Okay. Okay. So now if this t is greater than 1, then if we move from minus infinity to t, we get tau from 0 to 1 again.
We get tau from 0 to 1. 0 to 1, tau is 1 by 2. Okay. So that's how. Yes, that's how we calculate the solve the convolution. So this is the second method, the last method that I am going to explain about. Method to solve convolution. So, xt is given is minus e to power minus t, e power minus t ut. Okay. Now first I always write the range of this convolution. Now ut is given ut plus 5. So the range is, so the variable t is positive and the breakpoint is minus 5. So the range is from breakpoint to infinity. So minus 5 to infinity. So if we take the convolution of both of these, so we have to find the common area between these uh, these two range. It is 0 to infinity and minus 5 to infinity. Okay. So which timeline includes both? So this one includes this also. This timeline includes this timeline. So we take this timeline as the resultant timeline, minus 5 to infinity. Now step 1 is we write xt is equal to e minus e power minus t ut, and xt is u t plus 5. Now we replace xt with tau e power minus tau u tau. So when tau is greater than 0, it will give us e tau, and when tau is less than 0, it will give us 0. This is the property of exponential function. Now in this second one, we have to replace t with t minus tau. Now we replace t minus tau here also, u t minus tau plus 5. What is the range of this? You can see the variable is minus and the breakpoint is t plus 5. Okay, the breakpoint is t plus 5, and as you can see the variable is negative, so our range will be from minus infinity to the breakpoint, which is t plus 5. This is t plus 5. Focus what I'm saying so you can understand that what I'm writing, because my writing is not good. I'm using a simple mouse to write. Okay. So now, if after that all of this stuff is done, now we are going to draw the time axis diagram of x tau and st minus tau. So if you draw x tau, so it will give a greater than tau, which is greater than 0. It will give us e power minus tau. So we draw it like this, and h t minus tau. So between minus infinity to t plus 5, it will give us 1 and n is 0. So minus infinity to t plus 5. Now we don't know that t plus 5 is less than 0 or greater than 0. Okay, so we make two cases, that t plus 5 is less than 0 and t plus 5 is greater than 0. So when t plus 5 is less than 0, then what is the area that we have? So I move from minus infinity to t plus 5, which is less than 0. The area covered is, if you multiply, you will get 0. So we get the area 0. Now if I assume that t plus 5 is greater than 0, now again I move from minus infinity to t plus 5. Now t plus 5 is greater than 0, and if you multiply both of these graphs, so we get from 0 to t plus 5 e power minus tau theta. Okay, from minus infinity to t plus 5, I see that, okay, we are not multiplying both of these, sorry for that. We see the common part that overlaps this, which has some value. Okay, so it is 0,
So it will give us nothing, but here we have something. It has a value of e power minus tau. So from 0 to t plus 5, focus on the cursor, from 0 to t plus 5, it having an amplitude of e power minus tau. So from 0 to t plus 5, it gives a e power minus tau d tau, e power minus tau, that is x tau. And what is the value of st minus tau? It is 1. Okay, so we do multiply it, but okay, we do multiply it. Okay, so we do multiply both of these ones. I was right earlier. Wait. Okay, so the value of st minus tau is 1 here, and the value of h tau is e power minus tau. This is a basic equation. This is a basic formula of convolution, and the limit is from 0 to t plus 5. So if we solve this, we get 1 minus e to power minus t plus 5. So the resultant we got here is, it is 0 when t plus 5 is less than 0, and it is 1 minus e power t plus 5 when t plus 5 is greater than 0. Or you can write that 1 minus e power t plus 5 ut plus 5. Okay, now moving forward, if you want to find the graph of, if you want to find the, okay, so if you want to make a graph of this one, so as I have told you earlier that this convolution is just like a, just equal like a multiplication. So it doesn't matter that if you draw xt as x tau or st as x tau. Here is example. In this example, we have drawn x as t minus tau and h as tau. We replace st minus t with st minus tau here. So it will come. It will written like 1 minus t plus tau. So our variable is tau. This is our variable tau. Okay, it is positive, and the breakpoint is tau is equal to t minus 1. This is the breakpoint and it is positive, so we get range of from 2 t minus 1 to minus infinity. Okay, so this is the range, and the value is 1 because the amplitude is 1. Okay, so and in the second one, the ultimate level, and in the second one xt, we have written h tau, so we just replace t with tau. Now if t is greater than, tau is greater than 1, then it is e minus tau, and if it is less than 0, then 0. So first, always remember that it doesn't matter that we always have to first the graphical graph of x tau. Okay, whoever has the tau, okay, we draw graph of that function first. It doesn't matter that we always have to draw x function first, because in this case x is having t minus tau and h is having tau. So whoever function that has tau, we draw that function first. We draw the graph of that function first. So we first draw s tau. We see tau is greater than e to the power minus tau greater than 1. We draw like this. Okay, like this. Now we see. Now we draw st minus tau. So it is 1 when
in between t minus tau to infinity. T minus tau to infinity. Now I don't know that t minus tau is greater than 1 or less than 1. Okay, I don't know. So I have taken two cases that in the first case that t minus tau is less than 1. So this is the basic formula of convolution, that is from minus infinity to infinity xt minus tau s tau, okay, which gives us from, if it is less than 0, we can from that it gives us from 1 to infinity. If we multiply that, we get this graph from 1 to infinity e to the power theta minus tau d tau. So it gives us e power minus tau. And when that t minus tau is less than 1, it's less than 1, then it gives us, if you multiply that, it gives us t minus 1 to tau e to the power minus tau. It gives us t minus 1 to infinity. Sorry, it gives us t minus 1 to infinity, and this one came from here, and this t minus tau came from here. Okay, now multiply them and we get this. Now if you want to write, you can write it like this, that y that yt is e power minus 1 when t minus 1 is less than 0, less than 1, sorry, and it is minus 1 t minus 1 when t is on is greater than 1. You can write the result like this. It is not working. Oh,